Good morning, good evening, and Assalamu alaikum. Today we are here with Dubai Islamic Bank, and we are going to talk about the banking beyond boundaries with Roshan Digital Account. Roshan Digital Account is one of a revolutionary product which Central Bank of Pakistan has created specifically for non-resident Pakistani or expat Pakistani to stay connected with Pakistan and also meet their everyday or lifestyle banking requirement as well as their investment aspirations as well, and become a part and or participate in the Pakistan growing economy right now. Today, the session, we are joined by Mr. Raza Bashir Tarar, High Commissioner of Pakistan to Canada. We also have Mr. Shahid Ahmed Khan, Honorary Consul General of Pakistan in Boston. We have Mr. Syed Irfan Ali, Managing Director, Deposit Protection Corporation, State Bank of Pakistan. We have Mr. Junaid Ahmed, our very much President and CEO of Dubai Islamic Bank, Pakistan. And in a panel, we will be joined by Sufyan Yousfi, GPS Market Offering Leader, Deloitte Risk and Financial Advisory USA, Samir Dosai, President Canada, Pakistan Business Council, and Sajid Salman, President TCF Canada. So all these guys will try to explore and explain that what Roshan Digital Account is, where the Pakistan is progressing, and we will invite your questions as well. And you can post your questions in the comment box of Facebook and the YouTube, wherever you are viewing us. So I formally request Mr. Junaid Ahmed to come and offer welcome remarks and set the objective of the session. So Junaid sir. Thank you, Sajid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to our viewers in USA and Canada, and good evening to our viewers watching from Pakistan. I am honored today to welcome our distinguished participants, His Excellency Raza Bashir Tarar Sahab. Am I audible, Sajid? Yes, you are. Ji, sir, you are audible. So I'm honored to welcome our distinguished participants, His Excellency Raza Bashir Tarar Sahab, High Commissioner of Pakistan to Canada, His Excellency Shahid Ahmed Khan Sahab, Honorary Consul General of Pakistan in Boston, Syed Irfan Ali Sahab, MD, Deposit Protection Corporation, State Bank of Pakistan, Sajid Salman Sahab, President TCF Canada, Samir Dosal Sahab, President Canada Pakistan Business Council, Sufyan Yousfi Sahab, GPS Leader, Deloitte Risk and Financial Advisory USA, and our moderator of today's webinar, Sajid Aslam, Country Head, ACCA Pakistan. And last but not the least, our viewers to this webinar, Banking Beyond Boundary with Roshan Digital Account. First of all, I would like to congratulate State Bank of Pakistan on its landmark achievement in launching Roshan Digital Account, the first of its kind digital solution for the non-resident Pakistani diaspora. The success of Roshan Digital Account is now well known to everyone, with numbers cross 176,000 accounts and with around $1.5 billion received in record short time of just 10 months. A successful collaboration can be seen between the regulator and the member banks to ensure that RDA account can cater to investment and lifestyle needs of non-resident Pakistani diaspora. Now I would like to request His Excellency Raza Bashir Tarar Sahab and His Excellency Shahid Ahmed Khan Sahab to give their opening address. And I would like to thank all of the non-resident Pakistanis in Canada and USA for the wonderful contribution resulting in remittance of about $150 million from North America. Thank you. Over to His Excellency Raza Bashir Tarar Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. बहुत शुक्रिया जी जुनैद साहब and also to all your esteemed colleagues for putting this together. It's very heartening to see Irfan Ali Saab as a member of the panel. He has really been,
the bedrock of this effort to disseminate information about Russian digital accounts. Now, as you have rightly said, it's RDA is obviously a landmark achievement and an excellent example of synergy between the regulator and the regulated banks. We have organized or participated in some other webinars as well, and a lot of useful information came about. Now, if you permit me, I would basically go through some points that I have here as is customary. As you know, I mean, the Prime Minister of Pakistan has obviously been consistently emphasizing the importance of overseas Pakistanis and their contribution to the economy of Pakistan and the vital role that their remittances play. So in this regard, the RDA scheme is an excellent way of, further sort of optimizing that potential. And we have received, I mean, the reference level right now is unprecedented, speaks volumes for the trust reposed in the government by overseas Pakistanis. And there are extremely impressive figures. Pakistan right now ranks sixth among the world's highest receivers of foreign remittances. And obviously, this Russian digital accounts scheme is a great leap forward. In terms of connectivity and the optimum use of IT, and many Pakistanis rightly feel that they have crossed quite a big psychological barrier. They used to have this apprehension when dealing with Pakistani banks. So this shows the quality of banking in Pakistan and its trustworthiness. Then obviously a lot of accounts have been opened, very large, some has been deposited. And then in investments in Naya Pakistan certificates have also crossed the 770 million mark. And then we have seen addition of 2 new products also, the Roshan Apni Kar scheme and the Roshan Samaji Khidmat. Under the Apni Kar scheme, overseas Pakistanis are like a click away for purchasing a car without the usual hassle. The Roshan Samaji Khidmat offers a simplified mode to non-resident Pakistanis to send donations to Pakistan. And donations and zakat can be given extremely conveniently through the bank's portal. Then it's the RDA is a tailor-made financial solution designed to facilitate non-resident Pakistanis and remitting their money to Pakistan. And needless to say, the growth potential is immense. We have 9 million Pakistanis residing abroad. So it's basically still tip of the proverbial iceberg, and we hope to cover much more ground. It seems that कि हमारे पास एक कोई technical difficulty आ रही है, and we can see right now His Excellency Raza Bashir Tower, I think, got disconnected. So let's wait for a minute or so. Meanwhile, I think what Raza Saab has picked up on that, how great this product is and how it can help expat Pakistani to really connect back with the country. I used to live outside Pakistan, and I can really relate to that, how difficult it was when I have to send money or pay bills on behalf of my parents when they were here, and there was no one else to support there. So I think
Raza Sab is back now, so if you can bring Raza Sab to continue. Thank you, Raza. Cut off. There was some glitch. Ji, sir. So you can continue, sir. Ji, sorry. So there are some areas of concern also about security of accounts and the difficulty that is involved. We have received some complaints to that effect. Then obviously there is the question of Sharia compliance. And needless to say, these concerns were very ably addressed by Irfan Saab in previous webinars, and hopefully he would be enlightening us again. So I would basically wrap up my comments, although, being a keynote speaker is a very enticing concept and one can drone on, but I out of respect for your time, suffice it to say that so far so good. But and I'm not trying to, make like an hierarchy of markets in this regard, but certainly consumers in North America are used to, fairly high standards of banking. And I'm sure our banks will not be found wanting. So the more, incentives they have, the more convenience and ease they have, I'm sure they'll participate more wholeheartedly in the scheme. So thank you all very much, gentlemen, and over to the moderator. Thank you, Raza Sab. Thank you for your kind words. And you rightly said there's a certain level of expectation which exists out there. But knowing the history of Pakistan and knowing our history of the banking industry, they always surpass those expectations. And I'm sure this product is specifically, which is designed for expat Pakistani and specifically thinking about their diverse need and the way the state bank is also governing it. I'm sure any feedback will help us to improve on every day. And that's one of our requests always, that whatever the feedback you have, please do share it. That will help us to improve on an everyday basis. So thank you very much, Raza Sab. Here I'll invite His Excellency Shahid Ahmed Khan Saab, Honorary Consul General of Pakistan in Boston, to share their views as well as some comment on Roshan Digital Account and how expat Pakistani can really take advantage of it. So Shahid Khan Saab. Thank you, Shahid. Thank you, Sajid, and thank you very much for Nutshell Conferences to discuss this important topic, and honorable participants and the viewers. As we have learned from the High Commissioner's speech, this is one of a kind, banking initiative which Government of Pakistan has taken. Is very contemporary, and it also reflects the value of overseas Pakistani, which Prime Minister has many times addressed in his speeches. If you see this in the last 10 months, it was launched in September. In last 10 months, there's like 85% growth in the number of accounts. There has been more than 100,000 new accounts has been opened up. I personally, our office and in collaboration with the Pakistan Embassy in Washington, D.C., the Consulate General of Pakistan in New York, we have done multiple seminars to address to the overseas Pakistanis, our friends and colleagues here, to any facilitation if they need. But actually, this is such a straightforward system, and the documentation which is required to open up account is very easy. So no, we haven't heard any complaint of not getting through the process. The annualized return is very, very attractive. If you see in USA or actually in Canada as well. So in this way you are serving your place of birth, and you are serving your adopted motherland as well. It works both ways. So you can buy and sell properties, even though there are certain restriction at this point. Certain groups you can buy and sell. You can repatriate your profit back here, and only 10% you have to pay in terms of taxes. You don't have to file income taxes. So it's a very, very user-friendly setup.
And I really feel we all should take advantage of that. People who are listening, people who will reach out to us. We just facilitate. It's such a simple, straightforward, and honorable way of doing things. Of course, the question about Sharia compliant is there, but I am sure somebody is working on it and make this Sharia compliant. But with that, I will just wrap up my speech. Even though it's a keynote speech and the second keynote speech, so I will be happy to answer. I'll be stay the course, and will be happy to answer any question if someone has. Thank you, Shahid sir. Thank you very much, and thank you for staying with us. And definitely, I'm sure there are some questions which will be coming from the audience side. You raised a very interesting point, whether it's a Sharia compliant or not. And now we are getting Mr. Irfan Ali. I think he can really explain, and then we will have Junaid again, that how the State Bank has really thought through all those things, and how many different or diverse investment opportunity exist in there, and that's include the Sharia compliant products at the same time. So Irfan Sahib, if you're ready, so we can go with your presentation. So please welcome Syed Irfan Ali, Managing Director in Deposit Protection Corporation, State Bank of Pakistan. So welcome, Irfan Sahib. इरफान साहब, इट सीम्स आपका इस वक्त कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा स्टेबल नहीं है. लेट्स वी विल वेट फॉर अ मिनट. मीनवाइल हम जब शरिया कंप्लाइंट की बात करते हैं तो apparently I think if you have noticed that we are with Dubai Islamic Bank, and Dubai Islamic Bank is one of a leader to offer the Islamic products in Pakistan as well as to outside Pakistan to really cater the need of those requirements and make sure the people have a choice when they want to make their investments. Irfan Sahib, if you are available. No, it seems the connection is still not stable there. So meanwhile what we can do, we can request Junaid Sahib, if Junaid Sahib, you can come and make your presentation and share the different products which DIB is offering, as well as how this overall initiative is going, how DIB is contributing in that, and some of the feature set of those products. That would be great. Meanwhile, we will try to connect with Irfan Sahib. Sure, Sajid. Can you put my presentation on the screen, if you don't mind, please? Sure, it's coming up, sir. If I can request other speaker, if you can go on mute, we can hear some background noise here. Ji Junaid Sahib, the slides are there. Yes. Once again, I would request once again. I think Irfan Saab's speaker is on. Perhaps that's why there's a humming sound there. So if we can put our speakers on mute, then perhaps we'll have a clear conversation here. Yes. Thank you, Sajid. DIB Pakistan launched this product on 24th of February 2021. It started in September 2020, but it took us 5 months to come into this product because we were the second bank after Mizan to have gone into Sharia product, Sharia compliant products covering the digital Roshan account. So I will cover that Sharia piece in this presentation, which is in the subsequent slide. Brief background, gentlemen, of DIB group. Dubai Islamic Bank is the first Islamic bank of the world and the second largest Islamic bank globally. We have got presence in 7 countries, including UAE, where we have got our headquarters. In Africa, we have Kenya, Indonesia, Sudan, Turkey, Bosnia, and we have a presence in Pakistan. DIB UAE is the largest Islamic bank in UAE with over 2 million customers.
having an asset base of over $80 billion, and net profit of last year was $800 million, which dropped from $1.3 billion in 2019 to $800 million because, as a measure of prudent, the bank took some general provision due to the COVID situation globally and within the country. Dubai Islamic Bank Pakistan is a wholly owned subsidiary of Dubai Islamic Bank UAE, which has its operation established since 2006 and is operating with a branch network of 235 across 70 cities in Pakistan. We pride ourselves as one of the leading consumer bank in Pakistan, offering an array of Sharia compliant products, including auto, mortgages, personal finance, and durable finance, which, as per our product suite, can cater to non-resident Pakistani and cater to the customers who come into the ambit of RDA. Can we have the next slide, please? Okay. Yeah, got it. Roshan Digital Account enables non-resident Pakistani to digitally open and access their Pak Rupees account or any foreign currency account denominated in dollars, euro, sterling, and UAE dirham without the hassle of visiting branch or embassy. The customers can simply apply for an account opening form and from the comfort of their homes, and all they need to do is to upload their required details onto digital portal, and within 48 hours the account is fully activated for customer financial transactions. The RDA account is empowered to cater to a full suite of banking transactions, that is bill payment, IBFT, RTGS, payment orders, and over-the-counter cash transactions. Also, the RDA customers have the additional feature to invest in INPC, which is Islamic Naya Pakistan certificate, which is Sharia compliant, PSX on all scripts, including the Sharia scripts, and lifestyle products like Roshan Apni Car, which is the auto finance, having customized offering for the non-resident Pakistani diaspora, and unavailable anywhere in the world because the pricing and the terms are very, very lucrative, much better than what is being offered in the local market here, along with the functionality to repatriate with no charges or tax deduction. Can we have the next slide, please? Yeah. As the first Islamic bank in the world, we happen to be the only multinational Islamic bank offering RDA services. The product and the services under the umbrella of DIB Pakistan are 100% Sharia compliant. Leveraging our global position, we are offering account opening in PKR, which is Pak Rupees, US dollar, sterling pound, euro, Canadian dollar, Abu Dhabi, UAE dirham, and Saudi Riyal, whereby we are providing attractive FX conversion rates. I have been informed by customers that our conversion rates between CAD and Canadian dollar and the US dollar are better than what banks in Canada or US are offering. Obviously, this has to be tested by people living there, but this is what the information which has come to us. At Dubai Islamic Bank, we have a dedicated team working for RDA, whereby services for customers, hand-holding for onboarding to instant call and chat options are provided. To safeguard our customers, we ensure call back confirmation, which is being carried out for all financial transactions. And Alhamdulillah, since our launch in February till date, we have 0 complaints so far. We have launched the first Roshan Digital application app offering in app video, KYC, and instant account opening within 7 minutes. DIB, being the leading bank in consumer financing, is in the process of developing products offering personal finance and consumer durable for RDA customers, beneficiaries in Pakistan. Can we have the next slide, please? Yeah.
State Bank of Pakistan, based on feedback from the NRP diaspora, has been continuously working on offering privileges to the RDA account, which are not available in any other bank accounts in Pakistan. First of all, State Bank, along with support of FBR, simplified tax treatment, whereby the tax deducted is full and final tax on all investments. And when Irfan Saab comes in, he will explain the treatment in detail. Subsequently, the NRP having INPC and saving accounts, though they'll be subject to Zakat deduction, but State Bank Pakistan ensured that the RDA accounts and INPC investments are not subject to the rules applicable on Zakat deduction. So simply, it will be the withholding tax which will be deducted on the profit which are earned on deposits. State Bank of Pakistan ensured that Pakistani banks do not apply any inward or outward charges on remittances for RDA accounts, and facilitated RDA banks to work with their correspondent banks, whereby correspondent bank charges for RDA account, which would range between $20 to 45, have been brought down to $5 to $9 per transaction. This is a great achievement. Nowhere in the world you'll get a $5 remittances which are being charged by correspondent bank globally. On a daily basis, State Bank of Pakistan, along with RDA member banks, have teams working on developing new offerings for RDA, whereby in the coming days, we are looking at new products for house financing. We are a group of the bankers, including ourselves, who are working on this product, similar to Roshan Apni Car, which is the auto finance. I think that is the end of my, perhaps, Shajid? Sir, thank you very much, sir. Yeah. So thank you. I'm here to answer any question there. Thank you, sir. Thank you very much. I think just to summarize it, I think there's on our RDA account, there's a lot of opportunities which we have, how we can access banking or a lifestyle banking in Pakistan, as well as some of the investment opportunities which are available under it. And we will be talking about those investment opportunities further, whether it's a portfolio investment in stocks or Naya Pakistan certificate, as well as we can talk about the real estate, one of the popular topic among the expats. So we will be expanding on some of the product portfolio around it. And again, the way all the partner banks are working, and Dubai Islamic Bank, the way it's offering all the Sharia compliant products and the Sharia compliant banking, I think that's a good choice for people to really start opting for RDA. And I think एक और बड़ी अच्छी बात दरम्यान में उन्होंने की थी कि there's no harm in testing. If it's just, if you want to build the confidence, do try RDA. If you find it good, spread the word. If you don't find it good, please let the bank and the State Bank know that where you are struggling. We have got more than 170,000 people who have tested that. They are satisfied. They have already sent over $1.5 billion in Pakistan. So I'm sure when you will test it, you will find a value in that overall account and that relationship with State Bank and the partner commercial bank brought to our expat Pakistanis. So Irfan Saab, if Irfan Saab is here now. No, I think we are still struggling for a stable connection. नहीं इरफान साहब, हम आपको नहीं सुन पा रहे. नहीं, I think इरफान साहब, हम दोबारा एक दफा अटेम्प्ट करते हैं थोड़ी देर में. We will be coming back again. I think just taking a next step, we have got a great panelist with us, and we will be talking about, please do send your questions on the Facebook and the YouTube or whichever channel you are watching this broadcast. We can see all those questions here, and we will try to bring your questions to the panelists as well as to Dubai Islamic Bank and the State Bank, so we can talk about it, what your questions are, what more information you need. And also, if we are unable to answer any question due to any limitation, your questions are with us, and I'm sure Dubai Islamic Bank customer services and Dubai Islamic Bank team will be responding to those questions later. So do make sure that your question, any concern, be curious, try to find out whatever you want to, try to understand that product.
and try to spread the word at the same time, so we can improve the experience. We can really enable our expat brothers and sisters to really participate in the economic growth which Pakistan is really witnessing and experiencing at the moment. So here I'll try to invite Sufyan Yousfi Saab, and Sufyan Yousfi is a GPS market offering leader, Deloitte Risk and Financial Management. Before we begin in the panel discussion, I would really request Sufyan Saab, what's your impression and view around the economic outlook of Pakistan, and what sector you see can be a key driver for growth for Pakistan? So let's try to understand the economic growth process which is happening right now, and let's try to explain that to our audience. And audience, please do ask questions if you have. So we have got panelists available. We can try to get the answer for you. Sufyan sir. So जी, thank you. आपकी बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह लेआउट किया. I'll try to speak as much as I can in Urdu because बहुत सारे हमारे participants दूसरी जगहों पे हैं, वो शायद वो बेहतर समझें ज़बान को. There are a couple of things जब हम इकोनॉमी का सोचते हैं और ट्रेंड्स का सोचते हैं. तो हेडलाइन ये है कि जब आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ की उस रीजन में इकोनॉमी के साथ, स्पेशली कोविड-19 के तनाजुर में, तो हमें एक अच्छी पोजीशन नज़र आती है. पाकिस्तान की इकॉनमी जो जीडीपी है, जो और उन लोगों के लिए जो इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, इट इज़ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज़ बेसिकली पूरी कंट्री का आउटपुट क्या है. अगर एक कंट्री घर होती है तो उसकी इनकम क्या है या कमाई क्या है. तो पाकिस्तान का जीडीपी 2020 और 21 के उसमें हमें 3.94% की ग्रोथ नज़र आ रही है, विच इज़ रिमार्केबल. अगर आप कंपेयर करें कि कोविड-19 के दौरान हमने मार्केट्स बंद थी, बहुत सारी चीज़ों में स्टैग्नेशन था, इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं चल रही थी. सो दैट्स गुड न्यूज़ स्टोरी. अगर हम अपने आप को अपने पड़ोसियों से या किसी और रिलेटिव कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो 8.5% डेफिसिट में थी पिछले साल, और उसके मुकाबले पाकिस्तान डिड मच बेटर. सो ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? तो ये इस बारे में मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा. अगर आप पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को देखें तो उसमें कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं और कुछ नए सेक्टर्स हैं. ट्रेडिशनल सेक्टर में ऑब्वियसली एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर इस वक्त हमारी तकरीबन इकोनॉमी का 20.09% है, तो 20%. उसकी ग्रोथ 2.7-2.8% तक जा रही है. इंडस्ट्रियल सेक्टर इस तकरीबन 10.4%, और वो उसकी ग्रोथ परसेंट जो भी आई है वो 3.5% ग्रोथ आई है. बाकी जो सर्विसेज सेक्टर है इट्स अबाउट 12.1, और वो भी कोई 4.5% के हिसाब से ग्रो किया है. तो इसमें इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी के हिसाब से अपने कॉलीग्स के साथ बात करूं, व्हेन आई लुक एट पाकिस्तान देयर आर 2 or 3 एरियाज विच आर क्वाइट अट्रैक्टिव फ्रॉम अ ग्रोथ परस्पेक्टिव. वो कौन से हैं? पहला तो ये कि एग्रीकल्चर, अब जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के ऊपर पॉकेट्स में काम हो रहा है. बहुत सारे वर्ल्ड बैंक और IMF एस्टैब्लिश प्रोग्राम्स हैं जो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कम पानी लेके ज़्यादा क्रॉप की यील्ड, क्रॉप डैमेज ना हो, उसकी तरसील का हिसाब, उसकी सप्लाई चेन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज हमने जिस तरीके से इकॉनमी पे और या एग्रीकल्चर पे काम किया पाकिस्तान में, वो काफ़ी उसमें मॉडर्नाइजेशन की, उसको बेहतर करने की, तरक्की आती है काम करने की. देयर इज अ लॉट ऑफ रूम देयर फॉर दैट. दूसरा जो ब्राइट स्पॉट मुझे नज़र आ रहा है वो ड्यू टू द रीसेंट पॉलिसी एंड रेगुलेटरी चेंजेस, वो है जी कंस्ट्रक्शन में. क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ और इस किस्म की चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूस्ट हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि होगा, मज़ीद होगा. तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो हॉट मार्केट में जाएंगी. तीसरा जो सेक्टर है जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो है जी हमारी डिजिटल इकॉनमी. थिंग्स लाइक रोशन डिजिटल, things like e-banking, things like the Food Panda type apps that we use for daily use. इसके लिए मैं इसलिए इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि 3-4 चीज़ें अब नई हुई हैं इकॉनमी में जो पहले शायद नहीं थी. आज से 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले नहीं थी.
वो ये कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान में बढ़ी है। क्या वो अभी भी वहाँ है जहाँ होनी चाहिए? नहीं। क्या वो उससे बहुत बेहतर है जैसे पहले थी? यकीनन। जाहिर है, जब इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास आता है तो बहुत सारी उसके ऊपर इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज उसके ऊपर बिल्ड होना शुरू होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो स्टार्टअप सर्विसेज का इकोसिस्टम है, अगर आप उसको पिछले 3 साल पहले या इवन 2.5 साल पहले से कंपेयर करें, इट्स नाइट एंड डे। तो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ है। और जैसे कि बहुत सारी मगरबी दुनिया के लिए COVID-19 was a destabilizing factor, for countries like Pakistan that was a great equalizer, बिकॉज बहुत सारे ऐसी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते थे ट्रेडिशनली, बिकॉज हम रिमोट थे या दुनिया के इस खत्ते में थे जिसका टाइम जोन, ऑल ऑफ दोज बिकेम क्वाइट एन एनेबलिंग फैक्टर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रीसेट हो गई। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इकॉनमी, लोग किस हद तक उन चीज़ों को कैपिटलाइज करते हैं। फाइनल थॉट ये है कि जनरली व्हेन यू थिंक अबाउट कहाँ पे फोकस किया जाए, इकोनॉमी में या इन्वेस्टमेंट में या ऐसी किसी भी चीज़ में, generally speaking, it's a good idea to get in when things are just about to pick up or just picking up. Because आप जब आप swing पे जाके अगर invest करते हैं, and frankly, I'm not here to provide financial advice or economic advice, but I'm just sharing kind of like macro trends which I see in the Pakistani economy. If Pakistan can outperform COVID-19 relative to expectations, then which it has. So it's a very exciting time for Pakistan. I'm very positive about it and very excited about it. No, thank you, Sufyan. I think that optimism is something which is inevitable. The way you rightly picked up, जिस तरह कोविड का पाकिस्तान ने इस वक्त I would say जिस तरह कोविड को हैंडल किया around the situation compared to the rest of the world, I think that's really remarkable. And at the meantime, when you picked up on the digital side, I think that's also we witness in Pakistan a lot. The people have got a more access in terms of information as well as in terms of the products and services, which initially they were a little reluctant or they may not be as confident as they are during the COVID, that like the way the education has transformed or reset itself, the overall delivery system or the e-commerce we see, the delivery of the food takeaways, all those things were the new phenomena which were always there, but not at that volume, which is creating a different kind of business opportunity today. And from a business opportunity question, we move to Samir Saab. Samir Saab, you are right now you are president of Canada Pakistan Business Council. So what is the general impression in Canada in terms of the business and how you see Pakistan in terms of the opportunities for business or investment? Sorry. Yes, I just realized that. No, thank you. जी. अस्सलाम वालेकुम. My name is Sameer Dosal and मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि Canada Pakistan Business Council is a not-for-profit, non-religious, non-political Canadian-based organization. हमारा mandate primarily is to promote bilateral trade between Pakistan and Canada. In trying to promote trade, it's always the concept that you promote bilateral relations. So we are very excited. As president of Canada Pakistan Business Council, I see a lot of connectivity between Canada and Pakistan. And on a personal level and on a collective level, on a board level, our members feel that there is tremendous opportunities that the Canadians of Pakistani origin can benefit, as well as take mainstream Canadian people to doing business in Pakistan. मैं बहुत दफा कनाडा और पाकिस्तान जाता रहता हूँ. Unfortunately, COVID की वजह से 1.5 साल से it's been नहीं जा पाया हूँ. But there's tremendous potential in what's happening. COVID की भी fight को बहरहाल कदरे I think देखा जाए तो Pakistan has fought a very positive fight in terms of COVID. So everything is indirectly affecting us. मेरे पास इस वक्त दूसरी स्क्रीन पे खुला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का स्टैट्स
And consistently for the last several years, we have continuously hit the mark of $1 billion of bilateral trade between Canada and Pakistan. Okay, good point, but by no means satisfactory enough. There is tremendous potential. हमारे पास potential है, हमारे पास जबरदस्त opportunities है for IT companies and agricultural companies and construction companies. मैं IT company को लेके चलूंगा कि सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ बहुत important factor होगा ये रोशन डिजिटल अकाउंट जो है is being seen as a very positive vehicle. And lot of people have आपने शायद पहले कहा था कि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि जी मुझे अगर मेरे भाई को या मेरी बहन को या मेरी अम्मा को किसी को कुछ चीज भिजवानी है, कोई बिल पे करना है, कोई चीज है, वो हमारे पास वो व्हीकल थी नहीं. वी हैड टू गो थ्रू चैनल्स व्हिच वर नॉट टेक्निकली अप्रोप्रिएट. सो दिस इज एन अमेजिंग चैनल एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ये चीज जो है वो एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी देगी. हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यहाँ बैठी हुई है वो चाहती है. एंड देखिए जो टेक सैवी और फाइनेंशियली सैवी लोग हैं वो हमेशा अपने पैसे उस जगह पे लगाएंगे जहां उनको नजर आएगा कि जी उनको बेनिफिट मिलता है. अच्छा, उसके बाद एक जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा जो है ना, वो हमेशा कोशिश ये करेगा कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में मिलेगी तो मैं दूसरी चीजें छोड़ के पाकिस्तान के लिए ये करूंगा. हमारे सारे लोगों के दिल धड़कते हैं कि यार पाकिस्तान में बेहतरी होनी चाहिए. हम क्या कर सकते हैं? एवरी सिंगल डे ऑफ आवर लाइव्स वी फील, मैं पर्सनली बड़ा पैशनेट हूं इस मामले में कि हम क्या कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन बढ़ा सकें, क्या चीज बढ़ा सकें. आईटी का सेक्टर है, आईटी के सेक्टर में काम करें. I don't know how much time do I have, but I just wanted to now come to a point where there are opportunities of real estate. आपने real estate का जिक्र किया. real estate का जिक्र में there are people from Pakistani origin who have been sort of pre-qualified for 1 million homes in Pakistan. उनका NAFTA का under negotiation है, design वगैरह चीजें चल रही हैं. They're not one, there are several of them. So this vehicle, the Roshan digital account, I think needs to be promoted constantly on a regular basis. हमारे लिए मोहतरम है दुबई इस्लामिक बैंक, हमारे लिए पाकिस्तान मोहतरम है, हमारे लिए स्टेट बैंक मोहतरम है. हम हर किसी के लिए wherever we can facilitate, we will be doing that to connect people. मेरा छोटा सा ये है कि ये चूंकि हम सेशन ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे तो लोगों में कंफर्ट लेवल आएगा टू गो ऑन, क्लिक एंड अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर हाउ इजी एंड हाउ कंफर्टेबल इट इज टू बी एबल टू डू इट. आपने एक बात किसी ने कहा कि जी ट्राई करें. मैं तो समझता हूं कि जी इट इज ओनली स्मूथनिंग ऑफ द प्रोसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड and people want to give back. अमेरिका में, कनाडा में, गो के मैं कनाडा में बैठा हूं, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में माशाल्लाह बहुत ही वेल एस्टैब्लिश लोग हैं और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इतना जबरदस्त रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है. गवर्नमेंट ने इंश्योर कर दिया, सेफ्टी फैक्टर इंश्योर कर दिया है, आपके रिटर्न्स हैं, गारंटीड हैं. इट्स ट्रिमेंडस एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेट थ्रू. टैक्सेशन लॉज क्लैरिफाइड हैं, सारी चीजें हैं, हम उसको आगे लेके चल सकते हैं. एंड आई थिंक आई जस्ट वांट टू ऑन बिहाफ ऑफ द कनाडा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल अश्योर कि ये व्हीकल के को और इसके अलावा जो सारी चीजें जो ट्रैक करती हैं हमें कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान, हम हाजिर हैं. थैंक यू रजा बशीर तारड़ साहब फॉर योर लीडरशिप. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप भी माशाल्लाह बहुत इंगेज्ड हैं कम्युनिटी से. तो इंशाल्लाह कलेक्टिवली, मैं हमेशा मेरा रोटरी का 15 साल का मोटो है जो मैं हमेशा यूज करता हूं कि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. आई एम अवेलेबल फॉर एनी कन्वर्सेशन एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू समीर भाई, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक इसमें आपने कुछ चीजों पे टच किया, वो क्वेश्चंस हमारे पास भी आए हुए हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है रोशन डिजिटल अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं. आप दुबई इस्लामिक बैंक की वेबसाइट पे जाएं, यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक दैट वन, और वहां पे आपको हेल्प भी अवेलेबल है.
In case you need a call back, you can have a chat, you can call to the customer services, and they are always available to assist you. It's a very simple process. वहाँ पे एक list of documents है, आप उसको अगर उस document की list को पहले देख लेते हैं तो then the process become very very simple. So आप जरूर उसके FAQs को देखें और वहाँ से list of documents which are very very simple standard requirements, look at that and उसके लिहाज से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और अकाउंट खुलवाना है. दूसरा क्वेश्चन, एक बात आई थी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का. तो देयर इज अ इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इज आल्सो अवेलेबल, जहां पे रेट ऑफ रिटर्न कैन गो अप टू 7% अगर आप उसको 5 इयर्स के लिए देख रहे हैं, और डॉलर बेस में हम बात कर रहे हैं. सो यूएस डॉलर बेस में द नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स ऑफर शरिया कंप्लायंट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ऑफर अप टू 7% रिटर्न्स. इसके अलावा इसमें जो एक क्वेश्चन आया कि क्या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, इफ वी इन्वेस्ट इन दैट, कैन वी यूज दैट फॉर फर्दर फंडिंग और फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी फ्रॉम पाकिस्तान? सो यस, नया पाकिस्तान certificate is definitely a bankable security and we can get more loan around it. इसके अलावा अभी हम दरमियान में बात करेंगे रोशन अपनी कार का, रोशन समाजी खिदमत का, और लाइफस्टाइल बैंकिंग की भी बात हो रही होगी इसमें. एंड मीनवाइल आई कैन सी अभी हमारे पास शाहिद खान साहब हमारे साथ हैं. सर, अगर मैं आपको इनवाइट करूं फ्रॉम अ यूएस पर्सपेक्टिव, how you see people are talking about RDA, Roshan Digital Account, और in general उनका impression पाकिस्तान के मतलब क्या है, और ये जो enablement अभी स्टेट बैंक ने की और पार्टनर बैंक लाइक दुबई इस्लामिक बैंक जिस तरह की सर्विस लेके अब उनके पास आ रहा है, is it something which they really value? But thank you very much, Sajid. मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस है reaching out to the folks in USA is quite positive. बहुत सारे लोग जो है वो इस किस्म के एक व्हीकल को देख रहे थे कि जिससे वो पाकिस्तान में रियल स्टेट ट्रांजैक्शन भी कर सकें, स्टॉक से ट्रांजैक्शन कर सकें विद हैंडसम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न. तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव है. अब ये आप नंबर्स ही अगर आप देख लें तो आप देख लीजिए कि कितना 85% इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर, सो विद इन 9 months. सो इट्स प्रीटी acceptable. और ये अब मेरा ख्याल है जितना हम इसको अभी प्रमोट करेंगे, like last week we had a seminar in Boston area, so about 50-60 Pakistanis attended that. It was for other processes as well of the consular services, but this Roshan digital account was also introduced. So far we are getting positive response, and let's hope for the best. Thank you, Shahid Sahab. Thank you very much. And Raza Sahab, Raza Bashir Thar Sahab, मेरा ख्याल है यही सवाल मैं दोबारा आपके पास भी लेके आऊंगा. जैसे अभी आपने दरमियान में जिक्र भी किया था while you in your keynote speech that the feedback mechanism, I think that feedback mechanism is a very important element for us to improve. We can assess, evaluate, anticipate certain requirements and build the product accordingly. But these are the products which are built, or this is a process of co-creation, because some of the requirement or diverse requirement which a non-resident Pakistani will be communicating to the partner banks and the state bank, that will help everybody to improve the experience, but more importantly, bring new products there. So if Raza Bashir Thar Sahab is here, so I think Raza Bashir Thar Sahab is ja chuke. So thank you for we thank Raza Bashir Sahab for their participation and keynote speech. Here I'll bring Mr. Sajid Salman there. I think they are working on a very interesting proposition. I think any expat Pakistani out there, the significant conversation happens on the quality of education, the access to education, and how Pakistan can improve the education landscape. So Sajid Salman Sahab is a president of TCF Canada. I would like, Sajid Sahab, if you can explain what TCF is doing, what is the current network, and how they are contributing in Pakistan education landscape. So over to you, Sajid Sahab. Thank you, Sajid. Sure. TCF Canada has been operating since 2009 as a registered charity. And by that, I mean that any donation to TCF Canada is returned with a tax receipt, which Canadian residents can deduct from their taxes
in the coming year. So, which brings me to a question that is it possible for this initiative by State Bank of Pakistan, which is a very positive initiative from a personal point of view, for me at least, can be expanded to reach the business community from an institutional account, from an organizational account? Can TCF Canada open a Russian digital account so that our donors can benefit from this facility and yet enjoy the tax benefit of donating in Canada to TCF Canada? Because if they donate to TCF in Pakistan directly, they will lose that advantage. And that is obviously a very, very important factor in a high tax society like Canada, where you pay incrementally something like 50% of your income in taxes. So any donation to TCF, that benefits from the saving on the tax side induces the donor to give more, and ultimately the benefit accrues to the poor children in Pakistan who benefit from TCF's efforts. So this is one of my queries and suggestion, if possible, obviously, from many other regulatory angles, that will help TCF Canada expand the reach to our donors in living in Canada, and greatly benefit Pakistan at the same time. Just to give you a perspective on TCF Canada itself, we raised about $3.5 million last year. We are primarily a volunteer organization. I'm a volunteer myself. We only have a staff of 1.5 full-time equivalent people. We have 11 chapters across Canada, from Vancouver to Montreal and all the cities in between. All our board members and officers are expat Pakistanis. So Pakistani diaspora is heavily engaged in educating Pakistan. As Samir said, our hearts beat to the tune of Pakistan, and whatever we can do sitting here matters a lot to us. So any improvement in that, any easing of that effort and struggle will go a long way in helping Pakistan. So I thank State Bank of Pakistan and the Imran Khan government for having the foresight to offer this facility to the diaspora. At the same time, if we can expand this with new products that are accessible to organizations like TCF Canada, it will be a wonderful leap into the increased support for Pakistan. Thank you, Sajid Sahab. I think we will take your suggestion to State Bank, and we had some other initial discussion. The product is evolving, and definitely they will try to do as much as they can. But I think your point is very valid. There's a lot of organization, a charitable organization like TCF, who are doing wonderful work in Pakistan. How we can enable them that the donation which is coming from such high tax rates country, the people can take a tax benefit at the same time. So definitely we will try to suggest that. Otherwise, there is a very strong product, Roshan Samaji Khidmat, as one of a product where you can send your zakat or donation directly to organizations of your choice. There are choices available. So that's one way to really avail a Roshan digital account, which can help you to really donate in Pakistan. But definitely something like which Sajid has raised, that how we can really route that where the donor can have a tax advantage. We will definitely take it up with the State Bank. I think there's another interesting area, which is a real estate, and we will be picking up on real estate. But before we go there, I just want to make sure if Irfan Ali Saab is there now. No, Irfan Saab, I think that's a very unfortunate. We are still unable to hear you. Okay, thank you. Nice, sir. I think we are unable to hear you here. Okay, Sufyan, I'll come back to you. आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था उस वक्त डिजिटलाइजेशन एंड एक्सेस की जब हमने बात की थी, और हम पाकिस्तान में भी एज ए ACCA समटाइम व्हेन वी आर टॉकिंग टू यूथ और हम उन्हें बात करते हैं कि डिजिटलाइजेशन has taken every young person and has created an access to the 81 trillion की economy rather than कि हम 315 billion की economy की बात करें.
but that might require a lot of initiatives like RDA, जहाँ पे payments की जो smooth payments हैं, और इसी तरह की और products हमें चाहिए होंगी, जिसकी वजह से जब वो international market में काम कर रहे हो, तो that can really enable them. So how you see that digitalization, youth, economy, and opportunity, if I give you these 3-4 words? Those are very interesting words. So let me start with how does the journey of digitalization starts in many developing nations. So we, जिस किस्म का मैं काम करता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज में हमने कोई 4 कंट्रीज में इस किस्म का काम किया था कि उनकी डिजिटल इकॉनमी को सेटअप करना और फिर इसको आगे लेके जाना. उसमें 3 किस्म के ट्रेंड्स थे. पहला ये है कि जब आप शुरू करते हैं इस किस्म की मार्केट, जनरली ऐप बेस्ड होती है, जनरली फ़ोन बेस्ड होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो लीप फ्रॉग करके, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था पहले. अब सारे पॉपुलेशन के पास है, ज़्यादातर पॉपुलेशन के पास किसी न किसी किस्म का इंटरनेट या हल्का फुल्का ब्रॉडबैंड एक्सेस फ़ोन के थ्रू है. उसमें 2 किस्म की सर्विसेज होती हैं. एक सर्विस उस किस्म की होती है जो लोकल मार्केट के लिए होती है. फॉर एग्जांपल जिस तरह की हमने फूड डिलीवरी ऐप्स की बात की, या लोकल बैंकिंग की बात की, या चैट और इस किस्म के फंक्शंस के लिए बात की, कनेक्टिविटी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं. और दूसरी होती है जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए होती है. पाकिस्तान में कोई पिछले 7-8 साल पहले एक डिजिटल रिफॉर्म का सिलसिला शुरू हुआ था. बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर एक डिजिटल ब्लूप्रिंट शुरू किया था, जिसको ये गवर्नमेंट काफ़ी आगे लेके गई है. उससे एडवांटेज ये होता है कि जो प्राइमरी मार्केट शुरू होती है वो जनरली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होती है. तो लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, राइड शेयरिंग सर्विसेज, राइड हेलिंग सर्विसेज, या आपने कोई कहाँ पे कोई जगह रेंट कर ली थ्रू दी ऐप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इनिशियली वो इस मकसद के लिए यूज़ होती है, उससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है और वो सारा कुछ एक सिलसिला शुरू होता है. लेकिन बाद में उसका जो ड्यूअल बेनिफिट होता है वो होता है डेटा क्रिएशन, एंड दैट बिकम्स द रियल वैल्यू इन द इकॉनमी. अब डेटा, लास्ट ईयर डेटा बिकेम actually 2 साल पहले डेटा surpassed oil as the most expensive commodity in the world. So data is now the most expensive commodity in the world. दुनिया में सबसे महंगी तरीन चीज़ इस वक्त डेटा है. तो उसकी जनरेशन जब होगी इन एप्स और इन प्रोडक्ट्स के थ्रू, आई थिंक दैट्स गोइंग टू चेंज द पाकिस्तानी डिजिटल मार्केट एज वेल. शॉर्ट स्टोरी ये है कि अगर आप पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें पाकिस्तान में कंपनीज का, सीड इन्वेस्टमेंट्स का, और स्पेशली डिजिटल कंपनीज का, हमने इस किस्म का कभी पाकिस्तान में इंटरैक्शन या एक्टिविटी नहीं देखी है. आई मीन हर 2 क्वार्टर में दे आर ईदर डबलिंग और ट्रिपलिंग. एंड अगर आप उन लोगों से बात करें जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो ये कहेंगे कि अभी हमने बस बीज ही बोए हैं, क्योंकि ग्रोथ की बहुत पोटेंशियल है इस मार्केट में. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो जैसे उसे कहते हैं जो स्टार्टअप्स हैं, जो आईटी कंपनी की स्टार्टअप्स हैं, लाहौर में बहुत सारी हैं, कराची में बहुत सारी हैं, उसके अलावा सरगोदा, फैसलाबाद, आई मीन ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज इट डजंट रियली मैटर कि आप कहाँ रहते हैं. उनकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है. आई टेल यू सजीद, एक एग्जांपल, मैं एक यूएन से रिलेटेड एक इन्वेस्टमेंट समिट में गया था न्यूयॉर्क 2 साल पहले. तो आई मेट 2 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स आए थे. उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई थी जो मवेशी जो होते हैं उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए थी, बिकॉज मवेशी की हेल्थ का, टेम्परेचर का, पानी की इनटेक का, दूध की प्रोडक्शन से बहुत बड़ा ताल्लुक है. मतलब इट इज़ रिलेटेड टू दैट. सो जिस तरह फिटबिट होता है आप इंसानों के लिए, उन्होंने जानवरों के लिए वो बनाया, और वो प्रोडक्ट उन्होंने पेश की इंटरनेशनल सेमिनार्स और जगहों पे. दे गॉट फंडिंग एंड दे आर वेल ऑन देयर वे टू सेलिंग एंड पैकेजिंग दैट. माय पॉइंट बीइंग, अगर आप पाकिस्तान में कहीं घर में मौजूद हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह स्टार्ट करूं, पाकिस्तान में स्टार्टअप सीन इस वक्त बहुत हॉट है. आई वुड रेकमेंड कि आप गूगल सर्च करें, और बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में बड़ी एक्टिव हैं. अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, this is a hot market to invest in, and there's a tremendous amount of activity happening. So I don't know if I directly answered your question, but I'm pretty optimistic about the startup scene in Pakistan right now. No, I think आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक सुफियान पिक किया, ऑल्दो मैं थोड़ा सा डेविएट करूंगा आरडीए से. बट स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली बहुत सी इनेबलमेंट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी की हैं, जिसमें होल्डको ऑप्को का कॉन्सेप्ट आया. इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर का एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है.
आपके पास टेक्नोलॉजी जोन्स की जो है एज अथॉरिटी, और वो एक पूरे टेक्नोलॉजी जोन जो अगले साल में आप 10 के करीब टेक्नोलॉजी जोन्स देख रहे होंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ टैक्स इंसेंटिव. सो पाकिस्तान, अगर मैं डेस्टिनेशन के हवाले से बात करूं तो डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ अ डेस्टिनेशन वी शुड इवैल्यूएट इन आवर बोर्ड रूम्स एंड वी शुड थिंक व्हाट वी कैन डू देयर. 220 million population, 60% less than 30. We are practically providing a workforce for the rest of the world. Engineers, accountants, lawyers, everybody is there. You will pick up that. Medical के profession की side से आप बात कर रहे हैं, मतलब you pick up a profession and you will get a very decent, educated, trainable people there, which we can leverage. So definitely opportunity perspective, so there is a certain optimism, but that still require an effort, and those efforts what we have to do together, like अभी जिस तरह समीर भाई ने भी कहा था, हमें मिलके काम करना है to make sure we are trying to really materialize that one. Coming back to RDA में अभी आपने बात की समीर भाई रियल एस्टेट की, एंड RDA एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है where you can directly invest in the real estate, और आप वहां पे कुछ certain जो इस वक्त सोसाइटीज हैं उनके साथ डायरेक्टली आप RDA के थ्रू, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और उसके रेगुलेशन रिगार्डिंग हाउ यू कैन टेक दैट इन्वेस्टमेंट टू फर्दर, उसमें प्रॉफिट कैपिटल गेन के हवाले से. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रोशन डिजिटल अकाउंट की सबसे खूबसूरत चीज है वो है रिपैट्रिएशन ऑफ मनी. अभी तक जितने भी अकाउंट्स हम अदरवाइज बात करते हैं, हम रेमिटेंस भिजवाते हैं पाकिस्तान में, तो वहां पे एक चैलेंज आता है, आपने अगर पैसे भिजवाए हैं तो वापस भिजवाने के लिए आपको रीजन चाहिए होता है. रोशन डिजिटल अकाउंट ने जो इनेबलमेंट की है इस हवाले से, चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप लाइफस्टाइल बैंकिंग के हवाले से आपने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला हुआ है, और तीसरी चीज जिसको हमने अभी टच नहीं किया, अगर आपने स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के लिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड्स की आप बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो रिसेंट प्रोग्रेस थी दैट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. तो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जब आप रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा रहे होते हैं, उसी वक्त आप CDC अकाउंट भी अपना ओपन कर सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और उसके गेन, प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट आप वापस भी लेके जा सकते हैं, रिपैट्रिएट भी कर सकते हैं, और जो टैक्सेशन की रिजीम अभी हम टच भी की थी, दैट कम्स आउट एज अ final taxation. So there are a lot of facility. I would encourage everybody, go and look at the FAQs on Dubai Islamic Bank website, also on the State Bank website. There's a lot of something which we never thought about before. That is something which Roshan Digital Account has enabled us. आप पाकिस्तान के सिनेरियो में सिर्फ ये देखें कि रोशन डिजिटल अकाउंट में आप डिजिटल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, उस KYC के लिए in such a complicated regulatory regimes across the different jurisdiction, and that's the beauty of the product, that it comply with everything, and that's where it provide you the information कि अगर आप as a businessman account खुलवा रहे हैं, as a salaried person account खुलवा रहे हैं, तो उसकी guidance आपके पास बहुत अच्छी और डिटेल में अवेलेबल है. So Roshan Digital Account is definitely a product worth exploring, and Dubai Islamic Bank offering all the Sharia compliant product alongside with that, so do explore that. Samir bhai, आप real estate की बात कर रहे थे. If you want to make some comment around the how you feel Pakistan construction or real estate market is moving right now. Tremendous potential, Bhaijan. Tremendous potential. I think, and one other point that I would like to make, and I hope you can hear me. You can hear me, right? जी सबीर. इतना tremendous potential है पाकिस्तान में real estate का कि I think we should be focusing a lot more on that. एक चीज मैं और इंटरेस्टिंग बात बताना अपने सामने को देखने वालों को सबको बताना चाहूंगा कि कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रियल एस्टेट के डेवलपर्स और कंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं. वो this could be such an amazing vehicle that we make sure that we bring those people on board to get a better understanding of all this and to facilitate and take advantage of this. बहुत अपॉर्चुनिटीज है. जो ये जो NAFTA और ये जो NEPRA वगैरह का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व की. I've been actually facilitating a few successful developers in our community over here and connecting them to Pakistan. And what I see is कि जो गवर्नमेंट साइड का जो सेक्टर है उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोकल प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, और मुझे बड़ी पॉजिटिव फीडबैक मिल रही है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर. सो इफ दे आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट स्कीम, आवर पीपल
can participate in the schemes that are private. गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला किया, बड़ा टफ स्टैंड लिया है कि जो स्कीम्स जो हैं उनको रेगुलाइज करेंगे, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज. सो आई थिंक दैट्स समथिंग we need to take forward. मैं रियल एस्टेट के साथ एक थोड़ा सा एक शिफ्ट लूं अगर आप इजाजत दें. 2-3 मुख्तलिफ कई सेमिनार्स में अटेंड करता रहा हूं, एंड मुख्तलिफ कॉन्वर्सेशन होती रही है. तो जो आपने एक जो बात कही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज ओपन थ्रू द प्रोसेस to invest into stock market. Phenomenal performance by the Pakistan Stock Exchange. It is undervalued and we can all benefit from that. एक और फैक्टर जो मैंने रियलाइज किया है, जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट से एंड जुनैद साहब बैठे हैं, थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब फॉर दिस इनिशिएटिव, कि गाड़ियों के लोन्स जो है ना, अगर मुझे वो लोन्स चाहिए तो अपेरेंटली यू कैन डू ऑल दैट through the Roshan digital account, and utilizing those benefits, you can even take loans to buy a car for your mom, dad, family, जो भी है. तो ये इतने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, और इसको हमने वर्ड को स्प्रेड करना है. रियल एस्टेट is tremendous, and I think we will continue to have conversations. People want, बहुत सारे वेल एस्टैब्लिश्ड लोग हैं यहाँ, वो चाहते हैं कि मेरा एक घर जो है, कुछ लोग यहाँ होते हैं वो कहते हैं मेरा एक घर फ्लोरिडा में चाहिए मुझे. कुछ ऐसे लोग हैं बहुत डाई हार्ड, उनका दिल धड़कता है, वो कहते हैं यार मुझे ना एक घर चाहिए, लाहौर में चाहिए या इस्लामाबाद में चाहिए या कराची में चाहिए. And I'm sure I can see the smile on many of the faces, because that's a reality. And why not? If there are safer opportunities, जो schemes safe हैं, government guaranteed हैं, why not? People will invest and that will help enhance our economy. हम तो एक जगह पे खड़े, इतना springboard opportunity है for Pakistan to take the leap. वो कहीं भी जा सकता है. हमारे डायस्पोरा, हमारी कौम और हमारी लीडरशिप एक जगह पे मुत्तहिद हो जाएं, तो sky is the limit for Pakistan. No, thank you, Sameer bhai. And I think आपकी इसी product पे ना, I'll invite Junaid साहब here as well. Junaid साहब, right now we can see certain products, जिस तरह हमारे पास lifestyle banking आ गई, हमारे पास नया पाकिस्तान certificate, शरिया compliant certificates आ गए, हमारे पास रोशन अपनी कार आ गई, रोशन समाजी खिदमत आ गई, और इसके अलावा लोन की भी ऑप्शन आ गई, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आ गई, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आ गई. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर करंटली इनेबल्ड बाय रोशन डिजिटल अकाउंट. सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो आगे का रोड मैप हमें क्या नजर आता है, कौन सी ऐसी नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं which State Bank and the Dubai Islamic Bank will be working together to create that products for specifically for non-resident Pakistani or maybe the entities, जिस तरह अभी साजिद साहब ने भी बात की, जैसा TCF वहां पे एक चैरिटेबल एंटिटी है, तो क्या वो अकाउंट्स भी खुल सकेंगे किसी स्टेज पे? पहले आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के थोड़ा सा रोड मैप की बात कर लें कि फ्यूचर में हमें कौन सी नई प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं इस साइड से. थैंक यू सजीद. I'll address your question, but before that जो समीर साहब ने बात की है, ज़रा मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा. एक तो ये कि सबसे पहली बात है, I have lived outside the country for 35 years, so I have the experience. I have been a non-resident Pakistani, so I know how difficult it was in the initial days to conduct your business in Pakistan if you're living abroad. अब ये RDA account के through in 7 minutes you can open the account. It's all digital. You have to have your telephone. You're sitting in a coffee shop. You can open the account and you can transact straight away after 48 hours once the account is established and all the ड्यू डिलिजेंस एंड एवरीथिंग इज डन. दूसरे ये जो रिटर्न है, अगर आप 5 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करते हो तो आपको डॉलर्स में 7% के रिटर्न आ रही है. अच्छे, हिस्टोरिकली इफ यू लुक एट द डिवैल्यूएशन ट्रेंड, तो 4.5% की एनुअल डिवैल्यूएशन 15 साल की हिस्ट्री का ले लें तो होती है आपकी. तो लेट्स से आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है और आपको 4.5% का जो डिवैल का एडवांटेज है वो मिल रहा है. अगर आपने ये 5 साल के लिए 7% का डिपॉजिट रखा है $1,00,000, तो उस पर आपको कंपाउंड बेसिस पे कोई मोर देन 35% का रिटर्न आ जाएगा. और उसी हिसाब से अगर आप ये डिवैल का फैक्टर ले लें 4.5% का, तो तकरीबन 32% का रिटर्न वहां पे आ जाएगा. यू आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट 70% plus on your investment in 5 years time.
If you convert those dollars into Pak rupees, obviously, if you have to buy a house, if you want to invest locally in the local currency, in the stock chain, or any other investment. तो एक तो ये जो प्रोडक्ट है मैं समझता हूँ इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट दैट पाकिस्तान हैज ऑफर्ड टू द डायस्पोरा एंड द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान। और प्राइम मिनिस्टर की इनिशिएटिव थी कि वो चाह रहे थे कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को जितना सपोर्ट कर सकें वो करें। तीसरी बात ये है कि कुछ बैंक्स लेवरेज भी कर रहे हैं उसको। अगर वो लेवरेज प्रोडक्ट को देखें तो वो कोई उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है IRR वो तकरीबन 12% की बनती है। I'm not sure whether these products are available in the US and Canada, but in some banks in Dubai are doing it. And I think in Bahrain also, they have got this leverage product in few banks there. And we are also trying to come up with a Sharia compliant leverage product, which is under review of our management and the risk. तो ये एक तो मैं समझता हूँ कि एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि इस मुल्क ने फराहम की है अपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए, कि ये मेरे ख्याल में जब ये इनकी टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इस पे स्टॉप लग जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड दैट आप अपने जितने जानने वाले लोग हैं उनको ये बताएं कि ये अपॉर्चुनिटी जो है इट इज देयर टू ग्रैब इट नाउ और दे विल परहैप्स मिस द बोट जहां ये उन्होंने कम किया। और ये दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं अगर आप इसको रियल एस्टेट में करते हो तो उस पर 3 साल की होल्डिंग के बाद देयर इज नो कैपिटल गेन। तो आप जो भी कमा रहे हो उस पर आपको कुछ नहीं लगेगा। अगर आपने स्टॉक में किया है तो 12.5% है, जबकि लोकली हम 20% पे करते हैं। तो हर तरफ से फायदा है। और जिस तरह से अभी समीर ने कहा है कि जो स्टॉक चेंज है अंडर वैल्यूड हो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक चेंज इन दिस रीजन। अगर आप देखें तो इस वक्त ये ऑलमोस्ट 47-48,000 के इस पे है और इंशाल्लाह ताला वी आर लुकिंग दिस इंडेक्स टू गो टू 55,000। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट्स, इस वक्त तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो एक तो वो है कि यू नो एक तो सर्टिफिकेट्स आपको इस्लामिक सर्टिफिकेट हम इशू करके दे रहे हैं और ऑब्वियसली द कन्वेंशनल इज आल्सो अवेलेबल। वो सारे करेंसीज में जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था, कैनेडियन डॉलर में भी है, US डॉलर में भी है, दिरहम है, यूरो है और मुख्तलिफ सऊदी रियाल। फिर आपके पास ये ऑटो फाइनेंस जो है वो प्रोडक्ट सारे बैंकों ने कर दिया है। अच्छा, ऑटो फाइनेंस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी जो चार्म है वो ये है कि यू नो एट 7% which is sub Kaibor rate. The Kaibor today is 6 months 7.6%. You are getting finance at 7%, which is sub Kaibor. A Pakistani living in Pakistan, they have to pay 4% over Kaibor. So they are borrowing at 11%, while the Pakistani not resident account holders are. Sorry, I'm a bit amused and I'm very happy that this is the opportunity that our non-resident Pakistanis they have. क्योंकि 7% पे आपको गाड़ी की फाइनेंसिंग मिलती है, आप गाड़ी लें और गाड़ी माशाल्लाह जो इस वक्त ऑटो की वो है सेल है वो 57% ग्रोथ शो कर रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और हमारे पास सारी ब्रांडेड गाड़ी जो आप यू नेम इट इट्स देयर एंड दे आर द ब्यूटीफुल कार्स दैट वी हैव गॉट इन द कंट्री नाउ। So there's a waiting period there, but from the DIB counter, what we do, we pick up big stocks from the people who are doing the assembly of these cars, likes of Honda Motors and Shirazis who are doing and Toyota and Suzuki. Even the Kia Motors, which has just recently they have launched their products now, तो वो हम ले लेते हैं 100-200 गाड़ियां और फिर वो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। सो उनको टाइम पे मिल जाता है और फिर उनको वो वेट करना नहीं पड़ता, प्लस उन्हें कोई प्रीमियम देने की जो है मार्केट में हो जाती है प्रीमियम, बिकॉज शॉर्ट सप्लाई इज शॉर्ट एंड द डिमांड इज मोर, बट व्हेन दे आर कमिंग थ्रू आवर काउंटर दे डोंट हैव टू पे दैट प्रीमियम। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि उनको 7% पे मिल गया। तो ये एक प्रोडक्ट है जो अपनी कार की है। उसके अलावा फिर जो समाजी खिदमत के जो शजीद आपने बहुत डिटेल में बताया, जितने आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टू द लाइक्स ऑफ ईदीज एंड चीपाज, exactly. There's a long list. I think there's a quite a long list for choices. बिल्कुल। We have recently structured a financing for a customer against RDA deposit for real estate as well.
तो उस पे हमने ये किया कि आरडीआई डिपॉजिट्स को हमने उसको ईयरमार्क किया एज अ लियन, एंड देन वी एक्सटेंडेड द फैसिलिटी ऑफ रियल एस्टेट एट Kaibor plus 0.5%. Kaibor plus, while the rate of real estate lending is Kaibor plus 3%, 2.5% for salaried and 3.5% for non-salaried people here. वो इंडस्ट्री के जो रेट है, तो 0.5% पे, और अब जो हम प्रोडक्ट पे जिस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन 6 to 8 weeks वी शुड बी एबल टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट. वो स्टेट बैंक के इस पे अम्ब्रेला पे कर रहे हैं हम. अगर वो आ जाता है तो फिर वो पॉलिसी रेट प्लस 1% पे इंशाल्लाह ताला हम उसको रेकमेंड कर रहे हैं. हो सकता है कि वो अप्रूव हो जाए उस पे, तो ये वो काइबोर प्लस 0.5 से भी कम हो जाएगा फिर ये. तो मैं समझ, उसके अलावा फिर वो अब हम तकाफुल के कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं. फिर हमारी जो ड्यूरेबल फाइनेंस है जिसमें वाइट गुड्स की हम करते हैं फाइनेंसिंग, वो आ जाएंगे. उसके अलावा पर्सनल फाइनेंस, वो हम एक प्रोडक्ट है जो बैंकों के पास है जिसको पर्सनल लोन कहते हैं, तो हम इस्लामिक पे उसको स्ट्रक्चर किया हमने पर्सनल फाइनेंस. एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये इट्स गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू जुनैद, थैंक यू. आई थिंक इरफान साहब भी अभी आए हैं, हम एक दफा दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, बट थैंक यू वेरी मच. लेकिन अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं ना, तो दियारे गैर में जितने भी हमने मसाइल काटे हैं ना, आरडीए ने आके उसको बहुत हद तक इस तरह बना दिया है कि वो वर्थ हो गया हुआ है. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, हमें बाहर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज वहां पे ज्यादा नजर आज ये जो है इट्स अ प्लैटर ऑफ fruits which has and the flowers which has been extended to our northern Pakistan. It's we are getting the best of the both worlds. I'm not complaining at all. No, I lived like a good 8-9 years outside as well. I can well imagine ये कितना बड़ी opportunity होती है where you can really leverage this kind of product and really stay connected back with them. इरफान साहब, अगर हम एक दफा दोबारा attempt कर लें, if we can hear you, some final remarks from your side. हम एक काम करेंगे, इरफान साहब के लिए एक एक्सक्लूसिवली अलग से प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल, इरफान साहब के साथ आई थिंक वी विल बी डूइंग अगेन अ प्रोग्राम. इरफान साहब इज like मैंने इनके साथ पहले भी प्रोग्राम किया. I think the way he explained that, I think it's marvelous and we should not miss out on that. Otherwise हम definitely कोई वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उनकी, जिस तरह वो प्रेजेंट करते हैं, और sometime एंड जिस तरह वो शायरी के साथ या शेर के साथ एंड करते हैं ना, how he like really consolidate the conversation. सर हमारे पास 1-2 मिनट हैं, हम अगर फाइनल रिमार्क्स ले लें सबसे, और फिर मैं जुनैद साहब की तरफ को हैंड ओवर करूंगा for the final closing remarks or closing of the event. So Sufyan, आपकी साइड से अगर हम शुरू करें, final 30 seconds key message. I'll probably sum it up in 10 seconds. Look, RDA से आज मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला इस conversation से, जुनैद साहब की गुफ्तगू और सारा कुछ. I think it makes our life easier as overseas Pakistani. Investment aside, but an opportunity kind of invest back in Pakistan and trade. और बहुत सारी चीजें आसान हो गई इसकी वजह से. So thank you for the opportunity and I learned a lot from everybody here. Thank you Sufyan. Sajid साहब, quick one. जी शुक्रिया बहुत बहुत आपकी अपॉर्चुनिटी का. I'd just like to add to Junaid साहब comment about the returns on the deposit, that right now TCF Canada has about a couple of $1 million sitting in GICs earning about 0.2%. So if you allow the organizations to open accounts, then I can give you some business. Thank you very much. Thank you, Sajid. So, Junaid sir, there is more reason to go back to State Bank and open up that at least charitable institutes के accounts open कर लो. Most certainly. We'll come back to you, Sai Saab, very soon, inshallah. Thank you. इरफान साहब यहाँ होते तो वो भी शायद आपको इसमें थोड़ा सा गाइडेंस और फर्दर कोई रोड मैप दे सकते थे, but we will definitely pick up with इरफान साहब. But right now, I think Junaid साहब can really represent your wish to him. Sameer साहब, final remarks, quick one. Thank you. Yes, I'm glad you said that. मैं ना अब आज इस वक्त बिजनेस पे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहूंगा. मैं जो साजिद साहब बैठे TCF के सिलसिले में, उनके हवाले से बात करूंगा कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में और बाहर से दे आर वन ऑफ द मोस्ट जेनरस पीपल जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़कात देते हैं
और अपने लोगों का ख्याल करते हैं, तो उन सब के लिए हमें बहुत जरूरत है जुनैद साहब, आप प्ली लें कि हाउ not taking away anything from TCS, but there are people who want to give back in many ways to Pakistan. तो उसको लाइन ऑफ एक्शन को फैसिलिटेट करना चाहिए. यू नो चैरिटेबल रिसीट्स वगैरह मिलती हैं, लेकिन अगर ये फ्लो थ्रू बेहतर हो जाए तो इट बी अमेजिंग. आई थिंक पाकिस्तान डिजर्व्स दैट सपोर्ट, और हमें करना है. लोग चाहते हैं पाकिस्तान के लिए हर लेवल पे, बिजनेस में पैसे भी कमाना चाहते हैं लेकिन देना भी चाहते हैं. So keep that into consideration, and the rest we will continue our bilateral trade talks at continued forums. So thank you, Samir. शाहिद खान साहब आपकी तरफ से फाइनल रिमार्क्स, और फिर जुनैद साहब आपकी तरफ से वोट ऑफ थैंक्स एंड क्लोजिंग में आपके पास आ रहा हूँ. शाहिद साहब. बहुत शुक्रिया सजीद, and I actually learned quite a bit today as well, even though we have been promoting this product for a while. तो बहुत शुक्रिया जुनैद साहब. मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये फैसिलिटेशन, दिस प्रोडक्ट फैसिलिटेट्स ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली हमारे तो नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानियों का बहुत ख्याल रहता है कि यहाँ से बहुत मुश्किल है. द चैलेंजेस द टू सेंड मनी टू पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट एंड यू नो चैरिटेबल कॉजेस के लिए भी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन. तो इस रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से, RD की वजह से ये बहुत हमारे लिए आसानी पैदा हो गई है, हमारे लिए और हमारे यहाँ पर रहने वालों के लिए. तो बहुत शुक्रिया अगेन. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. Thank you, Shahid sir. Thank you, Shahid sir. Over to you, Junaid sir. Final remarks, and then we will close the session. थैंक यू शजीद. एक्चुअली मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि इरफान साहब जो कि पायनियर हैं, और ही हैज पुट हिज आई थिंक डे एंड नाइट टुगेदर टू डेवलप दिस प्रोडक्ट, एंड देन यू नो हैंड होल्ड करके हमें लेके चले सारे बैंकों को. आई मीन ही इज द पर्सन हु इज कमिंग टू अस 8 o'clock in the evening and giving us the guidance कि इस तरह से करना है. वो within 2 weeks प्रोडक्ट डेवलप किया हमने उनके गाइडेंस. तो आई थिंक रियली मिस्ड हिम. इरफान साहब नहीं है. ऑल्सो मेनी थैंक्स टू आवर गवर्नर रजा बाकर साहब, आवर डिप्टी गवर्नर of State Bank of Pakistan, Irfan Sahab and his team, Arshad Bhatti Sahab. And for this forum, I would like to thank all the distinguished participants for their valuable thoughts and insights. This webinar will certainly be fruitful in paving the way for more inclusive banking products for our non-resident Pakistanis. I would also like to request non-resident Pakistanis to open the Roshan Digital account and explore the exciting product offerings linked with the Roshan Digital account, which I have explained in detail. Thank you all, and thank you all the viewers who connected with us. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Thank you guys. Thank you very much, and thank you audience. Do remember, look at the FAQs on DIB. Do remember that कि इसकी कॉस्ट जो है वो $5 से $9 के दरमियान होती है, और सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक चार्ज करता है. पाकिस्तानी बैंक इसकी कॉस्ट चार्ज नहीं करते. पैसा भिजवाने के लिए, पाकिस्तान रेमिटेंस के लिए, do use Roshan Digital account. That will definitely, you will find value in it. Thank you very much, and thank you for being there.